there's this one man to be blamed for that, Azhar bhai. And 20 years after that, I get a call from Ekta saying that they're planning a movie on the life and times of Mohammad Azharuddin. And I yelled and I screamed. I was like, you know, this is the best day of my life. I'm going to play him. But then after that, there was panic, there was nervousness, there was anxiousness. Because here's a man who's been celebrated, who's been minutely seen under the microscope by everyone in our country, in our nation for over 30 years. And it's a huge task. But our team is very excited. Rajat has written a fantastic script. And we're very gung-ho about this. And that's why, for the first time, I guess, someone's releasing a film, announcing a film almost a year before the release. So very excited, and I don't want to take too much time. Now we'll call up the rest of them. And yes, on that note, I'll call upon stage Tony D'Souza, the director of Azhar. Tony, please come on stage. And of course, now the two power ladies, as I would call them. Very apt for the role. They really worked very hard for the role, and a lot of people have asked me that why Emraan Hashmi is doing this film. I think he's been my favorite actor also. I've watched all his films, and I think he's very apt for the role, and I'm sure he's really worked very hard, and after he does the film, I think his name will be called Azhar most of the time. It appears to me like that. I don't mind that. देखिए तीनों पहलू के बारे में आपने जो देखा है, मेरे ख्याल में वो बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है, तो मैं समझता हूँ कि वो तीनों पहलू भी बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाएंगे मेरे ख्याल में, और मैं और तीनों पहलू पे विजिट करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरी लाइफ से अटैच हुई। अजहर की लाइफ पे फिल्म बनी है। इस कैरेक्टर को प्ले करते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? एक चैलेंज नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहली बात तो ये है कि जो इनका क्रिकेटिंग स्टाइल है बहुत ही अनकन्वेंशनल था, एंड मैं जनरली एक एवरेज गली क्रिकेटर हूँ जो बैट को ऐसे ही स्विंग करता रहता हूँ, मेरा कोई फुटवर्क नहीं था। लेकिन जब अजहर भाई ने आके सिखाना शुरू किया मुझे, तो आई रियलाइज आई हैव अ लॉट टू लर्न इन क्रिकेट, एंड होपफुली आई हैव गॉटन स्लाइटली बेटर ओवर द पास्ट 3 months। लेकिन जो इनका जो लेग ग्लांस है वो अभी मुझे पॉलिश करना है। अभी 3 महीने हो गए और हम भी pretty much play around 50 overs every day, constantly in the nets, constantly whacking the ball. But let's see, we'll get it. We have to get it before the shooting starts. Actually मुझे बोला गया था, मैं जब हम लोग एक किसी बेसिक डायरेक्टर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था जब आई सेड एक बायोपिक, बहुत सारे बायोपिक्स मैंने बनाए हैं, बट आई सेड इस बार ऑथेंटिकेटेड बायोपिक बनाते हैं। एंड दे सेड दैट देयर इज ओनली वन बायोपिक दैट नीड्स टू बी मेड, और वो है अजहरुद्दीन का, और वो लेकिन परमिशन नहीं देंगे, तो आप वो छोड़ के किसी ना, मुझे ना सुनना बहुत अच्छा भी लगता है और आई लाइक टू चेस दैट, सो आई सेड इमीडिएटली वी शुड गेट इन टच विद हिम। आई थिंक इट टुक अस अबाउट 30 meetings with him and a lot of conversation about my dad because he's friendly with him, and a lot of convincing that there is going to be a lot of hard work put into making this biopic. And if anyone knows me knows that I have, मेरा क्रिकेट से दूर दूर का वास्ता नहीं है। अब नज़दीक हो गए, अब we are close, but I had to do a film of a biopic on any sportsman who had a life, तो that famous line that जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, ये एक बड़ी जिंदगी है, और हम दोनों को बड़े अच्छे लगते हैं। अजहर जी आपसे सवाल है मेरा कि आपने कहा आपके राइट में इस तरफ, मेरा सवाल है कि आपने कहा आपने इमरान की सारी फिल्में देखी हैं और हर फिल्म आपको भाती है, कौन से ऐसे गुण हैं इनके फिल्मों के जो आपको काफी पसंद आए? देखिए, जो जिसके लिए ये फेमस जो कहा जाता है ये तो है वो तो आप हटा नहीं सकते। जैसा कि मेरे जो तीन इवेंट्स हैं जो आपने बताया लाइफ के, तो उनके साथ भी एक जुड़ा हुआ इवेंट है, बट लेकिन बहुत से लोग इनकी एक्टिंग देखते नहीं, क्योंकि जब जाते हैं तो इमरान की फिल्म देखते हैं, बट हम ये चीज़ देखना चाहते हैं। बट लेकिन यहाँ पे जो ये फिल्म होगी बिल्कुल अलग तरह की होगी, और आप देखेंगे इमरान भाई के यहाँ पे एक्टिंग स्किल्स, उसके बारे में एक अलग
मेरे ख्याल में इनका रुतबा हो जाएगा ये फिल्म के बाद, जहाँ तक ये मेरी सोच है। इमरान जब शॉट्स की बात याद आती है आपको, तो कौन सा उपयोग, जो कौन सा फेवरेट शॉट है आपका जो अजहर भाई का काफी पसंद है आपका? लाइक डेफिनेटली लाइक ग्लांस ही होगा, और क्योंकि इनके जो रिस्ट हैं दे ऑलमोस्ट लाइक रबर, बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं। और जो पहली चीज़ मैंने फेस की जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया, बिकॉज आई वेट ट्रेन अलॉट, मेरी रिस्ट हिल ही नहीं रही थी, एंड देन ऑफ कोर्स मैंने वेट ट्रेनिंग अभी छोड़ दी है, and we have been rigorously training with yoga to get there to the point. Obviously, I won't be as good as Azhar bhai by the time the film starts, but I have to look that. I have to be and portray a character and show. जब मैं फील्ड पर उतरूंगा और जब शॉट मारूंगा तो आपको लगना चाहिए वो हेलमेट के पीछे अजहर हैं. So that is it'll be a battle won. और एक ही साल में 2 फिल्में आएंगी, लाइक धोनी पे भी बायोपिक बन रही है, आपकी भी फिल्म 2016 में ही आने वाली है, तो कुछ देखते हैं, कंपटीशन होगा, तुलना होगी. पता भी नहीं था कि दूसरी फिल्म के बारे में मुझे पता भी नहीं था. मुझे पता है कि अजहर आ रही है 13 मई को, दूसरी फिल्म के बारे में पता नहीं मुझे. The third test match against England, when you made the third 100 on trot, and that was history. Your fielding was amazing, your batting was really classy, and extremely simple person. But somewhere when the entire match fixing broke out, it was like I as a fan was totally heartbroken, and somewhere many still disbelieve that something of this sort happened. So what sort of element do we see of the match fixing angle in the movie, sir? I think it's very hard for me to say about it right now, because I think once you watch the film, once the film is made, I think you'll get a better perspective about that. So I don't think at this point of time I need to say that. But answering your question, you've been a very big fan. Thank you very much. And nowadays, whenever I go out, people don't remember my batting. They always say that Azhar साहब आप बहुत अच्छे fielder थे. So I just remind them as batting भी अच्छा करता था. Emraan, what sort of discussions have you had with Mr. Azharuddin for just preparing for your character? Well, I've troubled him a lot. जब हमने actually we started off in January and we started training in cricket, and the first day we started training on the turf. He obviously corrected everything about what I was doing. I was completely all over the place. My footwork was not right. I was swinging the bat around. I was pretty much not connecting the ball. And then he actually came up and he held my hand and the bat and he showed me where I should be putting my feet. And I kind of froze for like a couple of seconds. I was like, this is, I'm blessed. Like I'm being trained by the best batsman in the world. And I was like an average player in school. So this is a dream come true for me. But I have, even the questions that I had to ask him, in some way, even if they are not visible in the film, in that sense, in a 2-hour film, they just take for me to understand the background of the character. And I formulated 100 questions that I wanted to ask him. And he was very sporting to have answered all those questions. It's as much as which foot did he first put on the field when he stepped on it. So there was also these things that will come out. Why did he put his collar up? You will not know the answer of that till you watch the film. So there are a lot of things that will have to be answered in the film. I can't really answer it right now, but all these 100 questions will answer those, answer. The body language of Azharuddin is very important. The way you're walking in the teaser that we're seeing from behind. Yeah. It's exactly reminiscent of the way Azharuddin used to walk. Yeah. He has a very typical way, the way he used to walk. Actually. Yes. The best compliment was his son right now. He just said, was dad shooting? Did dad get the shot? Have you shot for it, by the way, Mr. Azhar? Well, you'll have to ask Tony that. It was me, and it took a hell of a lot of prep for everything. And now it's also the prep for the shoot. Getting into the scenes is obviously much more demanding than just a teaser. So we're all very nervous, but extremely excited. And I believe it's those films where you're very nervous and anxious because of the scale and what you have to achieve is when the best films are made. So we're all very, very nervous about it. स्नेहा, आपसे मेरा सवाल है कि पीकू काफ़ी अच्छा कर रही है और अभी भी आगे बढ़ती जा रही है, सभी लोग सराह रहे हैं. इस फिल्म में जब आपको पैसा लगाना पड़ा या इसके बारे में सोचना पड़ा, तो कितनी सोच थी या क्यों लगाया आपने अजहर के लिए एमएसएम की तरफ से? सोच बिल्कुल नहीं थी, because as Ekta said, if there is any biopic that needed to be made, it was Azhar's. I've been blessed to have known him for quite a few years now because of my connections with cricket. And which is why I thought I should team up with Ekta, because she knows nothing about cricket.
I have to team up with. She knows a lot now. You will be surprised. एकता फिल्म में हीरोइन अजहर जी अगर बात करें तो एकता कपूर ने आपको इस मूवी के लिए कैसे अप्रोच किया और आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि आप पे एक बायोपिक बनेगी? पहला रिएक्शन तो मुझे समझ में ही नहीं आया क्या रिएक्शन हो, क्योंकि मैं बहुत टाइम लगा मुझे कन्विंस होने के लिए, बट लेकिन एकता के फादर जो जितेंद्र सर है वो मेरे बहुत खास दोस्त है, और मेरे ख्याल में वो एंगल भी मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कहीं मेरे दिमाग में चल रहा था, तो इसलिए मैंने बहुत टाइम लगाया, बस हाँ कहा, तो मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल सही डिसीजन लिया, और इसलिए मैं आप लोगों के सामने। एकता फिल्म में हीरोइंस को लेकर अब तक कयास लगाए जा रहे हैं, तो आपने कहा था कि मैं खुद बताऊंगी, तो क्या आज आप डिक्लेयर करेंगी? बिकॉज आज टीजर में भी और यहाँ पर भी कोई मौजूद सर आज नहीं है। टीजर है, ट्रेलर के पहले प्रॉमिस। देखिए, अगर मैं डिसीजन लेता था, मैं चाहता था कि वही करें, बट डिसीजन मैं कैप्टन नहीं हूँ उसका, मैं तो बिल्कुल एकदम मैं तो बिल्कुल 11वां फील्डर हूँ समझिए यहाँ पे, बट लेकिन डिसीजन मेकिंग तो ये दो लेडीज़ लेते हैं, तो जब लेडीज़ डिसीजन लेते हैं तो आदमी लोग को बिल्कुल बाजू हटना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल सही डिसीजन है। Imran, do you think biopics are a safe bet because biopics? I don't know where these reports come from. You know, I think some journalist has a dream and the next day it gets printed. You know, well, I mean, there's a big wish list, and we have a couple of names we are discussing with. But like I said, we've just finished the writing of the film, and we have a certain amount of cast to be discussed. But the film has taken us, I mean, we're shooting from next month. We are, of course, in discussions with actors, but the film has taken us a year to write. Rajat Arora called me up and said, "Thank you for giving me the toughest film of my life to write. It's such a long life, such a big life to be put in 2 hours. It's taken my, I mean, he's lost his brains. He's not written another film for the last 1 year. So I think the time that it's taken us to write the film, it's going to take us that much time to cast, and till we don't finish and put everything on the dotted line, I can't make announcements." Imran, do you think biopics are a safe bet because you've been experimental in films in the past and unfortunately they haven't done well? So now do you think this is one thing that you're going to be hopeful of? Well, most of the biopics have done well, and I think you can't really segregate films that way and say it's not very formulaic, like you're saying that this works and this doesn't work, this genre will work and this won't. Eventually, a good film will work, and if you have enough content in the film to back it up and make a great film out of that. And this press conference itself says a lot. I mean, no one really goes out on such a front foot and announces the film a year before. It's because we were hearing the script almost a month back, and we were so excited about it that we said that this has to be made as an announcement before we start off, because we're extremely excited and gung-ho about this. तो एकता जो भी नाम अब तक आए हैं सामने हीरोइंस को लेकर, तो हमने मतलब कुछ गेस किया है, उनमें से कोई एक नाम है जो आपके दिमाग में चल रहा है? हो सकता है कि अभी भी कोई ऐसा नाम नहीं आया। स्नेहा रजानी। अजहर साहब, आपके ऊपर तो बायोपिक बन गई, आप किसी एक्टर का किरदार कभी निभाना चाहेंगे? किसी की बायोपिक करना चाहेंगे? अगर मौका मिलेगा तो अगर किसी दूसरे की करूँगा, ज़रूर कोशिश करेंगे। कोई है एक्टर आपके जहन में फिल्म इंडस्ट्री का? अभी तो मुझे कुछ मालूम नहीं। वो जो तावीज़ कनेक्शन है, हमने सुना है कि जब भी वो तावीज़ दिखती थी तो आपका छक्का चौका लग जाता था, तो कोई कनेक्शन, कोई मेमोरी है आपकी उस तावीज़ तो हर बार बाहर ही होती थी। आपने बिल्कुल मेरे ख्याल में पूरे मैचेस नहीं देखे होंगे, तो जो मैचेस आपने जहाँ पे मैंने नहीं देखा, जहाँ पे मैंने छक्के मारे आपने, वो मेरे ख्याल में वो मैचेस देखे हुए हैं। बट लेकिन तावीज़ ये मेरे ग्रैंडफादर की दी हुई तावीज़ है, मुझे खुद नहीं मालूम इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और मुझे कहा गया था कि कभी इसको खोलना नहीं, तो मैंने आज तक खोला नहीं, तो मुझे मालूम नहीं। बट लेकिन मेरे ग्रैंडफादर, मैं उनके साथ उनके बहुत क्लोज था, और उन्होंने मुझे ये तावीज़ दी थी, तो वो जब से दिए हैं वैसी है। तो आप जो कनेक्शन है उससे लगा सकते हैं, आप लगा लीजिए। Ekta and Tony, you all must have had many meetings with Azhar during the story sittings and stuff. So were you able to show everything about, especially his personal aspects of his life in an authentic manner? I mean, it's a biopic. Personal life is going to be as important as professional life. So it's everything. So it's the 3 lines. एक खुदा, 2 शादी और 3 मैच फिक्सिंग के केस. No, you have we've given out the 3 main elements of the life are going to be a part of the biopic. अजहर, आपको कभी कुछ ऑब्जेक्शन हुआ, कुछ चीज से आपने बोला ये नहीं हमें? अगर ऑब्जेक्शन होता तो मैं करता ही नहीं था। बिल्कुल मैंने देखा है, अभी पढ़ा है जो भी, तो बिल्कुल
बात करके जो भी लिखा गया है उसमें से इनपुट्स लेके ही लिखा गया है, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. You know, Ekta, here, Balaji is known to promote their films well. So, do you have any special marketing strategies planned for Azhar? See, I look at this way that films that are marketed well open well. Films that are really good continue doing well. So my marketing strategy for this film is that I am going to make a film that I will promote on front foot, but not because I'm good at promotions, because I think I'm decently good at making a good film. So I hope to make a good film first, you know. Promotion is going to be just because I believe in it. Once the film is out and it makes money, is there some profit sharing module in mind as far as what he's getting, considering, you know, in biopics the people on whom the biopic is made generally don't get An aspiring chartered accountant. I like your question, but I can't give you the answer. बिल्कुल, बहुत से चीज़ें देखिए, इतना अब एक ऐसे पूछेंगे तो काफ़ी चीज़ें हम लोग ने देखे हैं, इन्होंने बहुत पॉपुलर है और मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि जब तक हयात रहेंगे बिल्कुल पॉपुलर रहें. एकता, मेरा सवाल आपसे है एकता, आपने फिल्म्स में न्यूडिटी क्लॉज भी लेके आई हैं आप, तो क्या वजह है उसके पीछे की, क्यों है इसकी जरूरत? देखिए, ये XXX का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, इस पे मैं एक पूरा हाफ एन आवर आंसर दूंगी. बट इस फिल्म में न्यूडिटी क्लॉज नहीं है. इमरान, वी आर नॉट स्ट्रिपिंग इन दिस फिल्म फॉर श्योर. एकता, मेरा सवाल है कि क्या BCCI एज अ सेंसर इस फिल्म में एक्ट कर रहा है? क्या उन्होंने कहा है कि आपको फिल्म बनाने के लिए? वी आर सेंसिटिव टू ऑल पीपल and various organizations in the film. So we are going to take every action to see that no one is hurt and no sentiments are hurt. Okay. Hello, Ekta. Question to Azhar and Ekta both. क्या सलमान खान का भी कुछ इसमें हमें एंगल दिखने वाला है या कुछ स्टोरी में आप लोगों को? सलमान खान कोई प्ले कर सकता है except for सलमान खान? नहीं ना? तो if nobody can play सलमान खान, there can be no सलमान खान in this film. एकता, इधर बहुत कम लोग होते हैं जो हस्तियां बनाते हैं. आज 3 हस्तियां हमारे सामने हैं. इमरान ने अपनी फिल्म में हस्ती बनाई, आपने टीवी से लेके इस फिल्म तक हस्ती बनाई. अजहरुद्दीन साहब, जिनको क्रिकेट में सब लोग जानते हैं कि एक पोजीशन पे पहुंचे हैं. मैं सिर्फ 2 लाइनें आप सबके लिए कहना चाहूँगा कि बुलंद. स्नेहा भी है सर. हाँ, स्नेहा जी, डॉक्टर साहब, टोनी जी, के बुलंद कर अपनी हस्ती को, बुलंद कर अपनी हस्ती को उस हालात के लिए कि खुदा खुद तरसे तुझसे मुलाकात के लिए. थैंक यू सर. It's a human drama. I think every film is big, even if the budget of film is small. I think every film is big, no matter who makes it, no matter how it's made. In terms of approach, I think it's a film full of drama, and I have the best person with me to guide me on drama also, Ekta. I mean, I don't think I can find anyone better as a producer ever in my life. And I have Azhar Bhai for inputs, and I think with Emraan, the way he's perfecting everything in the film, it's just awesome. In fact, every day he spends time besides cricket, walking like Azhar, talking like him, eating like him. It's just going insane. Yeah. टिप्स मैं इमरान भाई से मैंने लिया. टिप्स लिए हैं. ये नहीं टिप्स लिए. मैं अपनी अगली फिल्म में इनकॉर्पोरेट करने वाला हूँ. On that note, thank you so much. On that note, thank you so much for joining us today for this Fishes for this one as the shoot commences next month. Thank you so much. And now for the photographs, please. Group photographs, please.